डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस आज वो शुरू करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। वो मैंने लिखा हुआ है पहले से। एक बेसिक चीज है, हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स इज गिवन बाय A cross B equal to set of ordered pairs AB such that A belongs to A, B belongs to B. Suppose example I have taken A equal to 1 2 and B equal to 3 4. Then A cross B consists 1 3 1 4 2 3 2 4 as ordered pairs. Number of elements in A 2, number of elements in B 2. We find that number of elements in A cross B 2 into 2 4. And we know that total number of subsets of any sets are 2 to the power n. So total subsets will be 2 to the power 4. Another example, suppose set A equal to 1 2 3 and I am finding the Cartesian product A with A cross A, that is 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. And if I write the ordered pairs in the form of subsets, so first subset as we know is 5, another 1 1 1 2. So we keep on writing the subsets, then there will be elements subsets containing two elements 1 1 1 2 1 1 1 3, then containing three elements like this. So total number of elements in A cross A 2 to the there are 3 into 3 9, and total number of subsets will be 2 to the power 9. ये जो सारी बात है ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। और हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं उसके जितने सबसेट्स हैं वो हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है। 5 सबसे पहला जो सबसेट है इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ए क्रॉस ए बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और ये बात भी आप जानते हैं कि किसी भी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स का हम सेट बना दें वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट रेंज है और सेकंड सेट कोडोमेन। ये सारी बात आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। नाउ वी कम टू द क्लास 12th फर्स्ट टॉपिक। और क्लास 12th का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सेम एग्जांपल लेते हुए मैं A 1 2 3 सेट है अपना, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखा A क्रॉस A। इसी एग्जाम्पल से मैं 2-3 रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला रिलेशन एक में लिख रहा हूं R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी। सो आई विल राइट दोज ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। सो दिस रिलेशन विल बी 1 1 2 2 3 3. Only 3 elements from this A cross A are part of this relation. Second example, R2. Another relation I am writing AB such that A is less than equal to B. A is less than equal to B. Those ordered pairs will be written in which A is first element is less than or equal to second. So we observe that there will be 1 1 2 2 3 3 and 1 2 1 3 2 3. Only these elements are the part. Suppose another relation I am writing R3 AB such that A plus B equal to 4. So in ordered pair form it will be 1 3 3 1 2 2. Suppose I write another relation R4 AB such that A plus B greater than 6. We observe that A plus B greater than 6. Any ordered pair satisfying this condition in A cross A, there is no ordered pair. So R4 will be written as 5. Now what we observe? We observe that in the first relation
every element is related to itself. 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3. Such relation is said to be reflexive. So first relation is reflexive. Reflexive relation is A belongs to R. Every element is related to itself. Now we observe that in second relation 1 1 2 2 3 3, every element is related to itself. Other than this, some more ordered pairs are there. In relation number 3, we observe that only 2 is related to 2, 1 is not related to 1, 3 is not related to 3. But when 1 3 is there, then 3 1 is also there. Whenever AB is there, BA is also there. Such relation is said to be symmetric. So symmetric relation is if AB belongs to R, then BA belongs to R. Now, there may be a relation in which AB is there, BC is there, then AC is also there. Such relation is said to be transitive. So, the relation in which ordered pair AB is there, BC is there, then AC is also there. Such relation is said to be transitive. तो हमने देखा कि रिलेशन की जो टाइप है वो 3 तरह की रिलेशन है. एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. A belongs to R. Symmetric में whenever AB is there, BA is also there. Intransitive, whenever AB is there, BC is there, then AC is also there. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation. Relation is equivalence relation. Now I will explain you by an example how to prove a relation, equivalence relation. R equal to AB such that A minus B is divisible by 4. For the set of real numbers, we will check whether this relation is equivalence relation or not. For the set of real numbers. Now, real numbers, if I write R cross R, every real number will be in the form of ordered pairs like 1 1 2 2 1 3 3 1 half 2. Every real number will be in the form of ordered pair. We will select only those ordered pairs which are divisible by 4. We know 0 is divisible by every number. It means 1 minus 1 divisible by 4. 2 minus 2 divisible by 4. 3 minus 3 divisible by 4. So A belongs to R. Reason, as A minus A is divisible by 4. So R is reflexive. Now let AB belongs to R. AB belongs to R means A minus B is divisible by 4. So when a number is divisible by 4, it means it can be written as in the multiple of 4. A minus B equal to 4 lambda, suppose. Which implies that B minus A
also equal to 4p. Whenever a minus b is divisible by 4, b minus a is also divisible by 4. Or when b minus a is divisible by 4, it means ba also belongs to R. So we have taken AB belongs to R and we have proved that BA also belongs to R. It implies that R is symmetric. तो जब हमें ये प्रूव करना हो कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, सपोज कोई ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, और ये प्रूव करेंगे कि बी ए भी उसके अंदर है. नाउ फॉर ट्रांजिटिव, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. So when AB belongs to R, our relation say that A minus B is divisible by 4. It means A minus B equal to say 4P. B C belongs to R implies that B minus C equal to 4Q. AB is in R, A minus B is a multiple of 4. BC belongs to R, B minus C is a multiple of 4. If I add two multiples of 4, that means again we will get a multiple of 4. A minus B plus B minus C will be equal to 4 times P plus Q. It implies that A minus C equal to 4 times lambda C. A minus C is a multiple of 4. It means AC belongs to R, which implies that relation is transitive. तो हमने देखा रिलेशन को अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. अगर दो मल्टीपल ऑफ 4 को ऐड कर दें, अगेन वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 4. a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब ac बिलोंग्स टू r, देन r इज ट्रांजिटिव. इसमें क्या वाइस वर्सा चलता है, क्या है कि अगर a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4, देन ab बिलोंग्स टू r, और इफ ab बिलोंग्स टू r, देन a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4. This relation is reflexive, symmetric, transitive, which means R is an equivalence relation. तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया जिसमें रिलेशन इक्विवेलेंस है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ना होके कोई रिलेशन जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. तो इस तरह के अलग अलग केसेस एग्जांपल लेके वो हम नेक्स्ट वीडियो में